Right. Is it visible? Yes, it is. Right. Bismillahirrahmanirrahim. तो आज हम we'll just cover the last part of this inheritance chapter, and finally this chapter is going to be over. And then the next class we'll just do some past paper topicals relating to this chapter. आज की क्लास में we're going to be expanding on gene expression का topic. So let's just quickly revise. हमने पिछले क्लास में gene expression से related क्या-क्या चीजें की थी. हमने कुछ डेफिनेशन सीखी थी. स्ट्रक्चरल जीन, regulatory gene, promoter region, inducible enzymes and repressible enzymes. So just quickly revising all of these. Structural gene वो जीन होती है जो कि ऐसे substances को प्रोड्यूस करती है जिनका सेल के अंदर ही फंक्शन होता है. रेगुलेटरी जीन ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करती है जो कि दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी जीन एक डीएनए के सेक्शन जो है ये एक ऐसे प्रोटीन या मॉलिक्यूल के लिए कोड कर सकता है जो कि किसी स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर दे. एंड अगेन एक्सप्रेशन का मतलब कि उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग होगी एंड ट्रांसलेशन होगी. सो दैट्स अबाउट रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन. प्रमोटर रीजन क्या था? ये वो रीजन था जो कि किसी भी रेगुलेटरी या स्ट्रक्चरल जीन के साथ होता है. इट्स जस्ट लिटरली लाइक नेक्स्ट टू इट. एंड उसका फंक्शन क्या है? इट्स द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. ये वो बाइंडिंग साइट है जहां आरएनए पॉलीमरेज अटैच करते हैं और वहां पे देन आफ्टर अटैचिंग टू द प्रमोटर इट देन गोज इनटू द जीन और फिर उस जीन की वो ट्रांसक्रिप्शन करता है. इंड्यूसेबल एंजाइम्स क्या थे? ऐसे एंजाइम जो सिर्फ तभी प्रोड्यूस होते हैं जब उनका सेल में कोई काम होता है, उनका सेल में कोई फंक्शन होता है. और रिप्रेसिबल एंजाइम्स क्या थे? इफ यू कुड एक्सप्लेन दिस, द लास्ट वन. दिस इज गोना बी अ बिट इम्पोर्टेंट टुडे. Could you repeat? This is going to be a bit important. Could you explain what repressible enzymes were? Uh, Basically, the activity of this enzyme, it can be inhibited by an effector. बिल्कुल ऐसे एंजाइम्स जिनकी एक्सप्रेशन, सो नॉट रियली द एक्टिविटी, उनका एक्सप्रेशन कैन बी इनहिबिटेड बाय अ फैक्टर. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन है और वो जीन किसी रिप्रेसिबल एंजाइम के लिए कोड करता है, उस जीन की एक्सप्रेशन मतलब उस एंजाइम की या प्रोटीन की प्रोडक्शन कैन बी इनहिबिटेड बाय एनी इफेक्टर या मॉलिक्यूल. सो इट्स नॉट लाइक कि वो प्रोड्यूस होगा और उसकी एक्टिविटी या फंक्शन हम इनहिबिट कर देंगे, उसकी प्रोडक्शन इटसेल्फ ही इनहिबिट हो जाएगी. डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. राइट. तो आज लेट्स कंटिन्यू. हमने पिछली क्लास में नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन की बात की थी. टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन के कौन सा जीन किस वक्त पे एक्सप्रेस होगा, कैसे एक्सप्रेस होगा, कितने रेट पे एक्सप्रेस होगा, दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट जीन एक्सप्रेशन एंड उसका कंट्रोल. तो उसका कंट्रोल वी आर गोना बी लुकिंग इन प्रोकैरियोट्स. फर्स्ट अप, could you tell me what's the type of DNA जो कि प्रोकैरियोट्स में एग्जिस्ट करते हैं? As in, Uh, is it the DNA with histone proteins or not? it does not have histone proteins. It's not true. And we would have learned this in AS, okay, the DNA which is not combined or you could say complexed with histone proteins is called naked DNA. तो उसको naked DNA क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस DNA की प्रॉपर तरीके से कॉइलिंग नहीं हुई हुई होती. हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि डीएनए की सुपर कॉइलिंग या कॉइलिंग हो जाए. अब जब हिस्टोन प्रोटीन्स ही नहीं है तो उसे नेकेड डीएनए कहते हैं. नाउ, इज दिस डीएनए इन अ डबल हेलिक्स शेप और इज दिस सर्कुलर? Circular. बिल्कुल. सो वी कैन राइट दिस डाउन फर्स्ट. इन प्रोकैरियोट्स there is circular naked DNA. We need to remember these two words. This is very, very important. Second, अच्छा जी. अब थोड़ा सा इस डीएनए के सेक्शन में हम जूम इन करते हैं. सो दिस राइट हियर इज अ सर्कुलर डीएनए. आई एम जस्ट, ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ राइट हियर, दिस which means कि मैं ये वाला जो सेक्शन है इस पे थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ. यू कैन टेक एनी रैंडम पार्ट ऑफ द सर्कुलर डीएनए. मैंने कोई भी रैंडम पार्ट ले लिया एंड आई एम जस्ट गोना एक्सपैंड. When you look at this circular naked DNA, इसमें you will find
six items which are very, very important to understand. सबसे पहली चीज which you're gonna find. I'm gonna write all of these genes in the boxes. मतलब you are gonna find different genes. So सबसे पहले right here, you are going to find a promoter region. अगर एक promoter region है, does that mean कि उसके बिल्कुल next पे एक gene होने वाली है? Yes. Either a structural gene or a regulatory gene, क्योंकि promoter का काम क्या था? Binding site act करना for the RNA polymerase. यहाँ पे RNA polymerase bind करेगा and then it will transcript the gene next to it. तो यहाँ पे इस gene को let's call this a regulatory gene. I'm just gonna be making the gene in boxes to make it easier. अच्छा, फिर if you go a bit more further towards the right या towards the left does not matter, you find another promoter region. Obviously इससे हमें क्या पता चलता है कि again there is going to be a gene next to it. बट यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज डालने वाले हैं बिटवीन द प्रोमोटर एंड द जीन. हम एक एक्स्ट्रा चीज डालने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में कवर नहीं किया था. दिस राइट हियर इज कॉल्ड द ऑपरेटर रीजन. और अभी हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर का मतलब क्या होता है. इज इट द सेम थिंग एज द प्रमोटर और इज इट समथिंग एल्स? हम अभी ये देखेंगे. सो वी हैव द प्रमोटर रीजन, वी हैव द ऑपरेटर, एंड देन वी हैव द जीन नेक्स्ट टू इट. फॉर नाउ लेट्स कॉल दिस स्ट्रक्चरल जीन. तो पहली वाली जीन को हमने नाम दे दिया रेगुलेटरी जीन. इस जीन को हमने नाम दे दिया एज स्ट्रक्चरल जीन. तो यहां तक की डायग्राम क्लियर है एक्सेप्ट ऑब्वियसली ऑपरेटर रीजन. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? So are these wordings, yeah, names of the materials or Yeah, the yeah, it's clear. I'm so sorry. I was speaking, but then my mic wasn't unmute. oh, all right, सही. अच्छा, यहाँ पे what we have here is simply a mixture of the genes or a mixture of the genes. यहाँ पे promoter region है, यहाँ पे regulator gene है. Basically all of these are sections of DNA. Prokaryotes में इन sections of DNA को एक नाम दिया जाता है and that is called operon. So have you done this in school? Have you learned about this? Yeah, I have. Right. Operon is a group of genes जो कि एक ही promoter region से control होते हैं. So let's say अगर हमारे पास ये structural gene है, if we had another structural gene next to it and another one next to it, ये तीनों structural genes, aren't they attached to the same common promoter region? Yes, they are. दे आर. मतलब कि जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा बाइंडिंग साइट पर, तो ये वाला जीन भी एक्सप्रेस होगा, उसके नेक्स्ट वाला भी एंड उसके नेक्स्ट वाला भी. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ द थ्री जीन्स आर कंट्रोल्ड और यू कुड से दे आर अंडर द सेम प्रमोटर. तो ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स व्हिच आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड कंट्रोल्ड बाय द सेम प्रमोटर, ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं ओपेरॉन. सो ओपेरॉन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स controlled by the same promoter. अब पहले मैंने just to explain all of the different regions in this circular naked DNA, I just made separate sections. What I'm gonna do now is I'm gonna create exactly what it looks like in a prokaryote. So I'm just gonna erase this. So हमें जब real life में जब हम prokaryote को देखेंगे ना, so this right here, this is not one structural gene. How many structural genes are this actually? Many? How many genes can you see here? Is picture में in this Oh, box right here? okay, three. Three structural genes. In a prokaryote, operon जो होगा will be operon की जो definition है ना, group of genes controlled by the same promoter. The specific operon we are going to be looking at will have three structural genes controlled by the same promoter region. What is the name of the operon in prokaryotes we're going to be looking at? We are going to be looking at something called lac operon. Now, is this really special? It is. It's just the name of the operon. So
ओपेरॉन जब एक ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल बाय सेम प्रमोटर, उसका सिर्फ एक टाइप है या उसका एक नाम है लैक। नाउ व्हाई इज दिस ओपेरॉन कॉल्ड लैक ओपेरॉन? क्योंकि ये तीनों जीन्स के जो नेमिंग है, नेमिंग सिस्टम है, देयर नेम्स स्टार्ट विद द वर्ड लैक। द फर्स्ट जीन का नाम है लैक जेड, सेकेंड जीन का नाम है लैक वाई, एंड द थर्ड जीन का नाम है लैक ए। let's for a second, before we move on, let's look at what all of these three structural genes in the lac operon code for. So this thing right here to here. तो ये पूरी चीज is called lac operon. अच्छा, अब ये देखते हैं कि ईच इंडिविजुअल जीन किन प्रोटीन्स के लिए कोड करती है या किन मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करती है। सो नंबर वन, लैक। In the lac operon, this is the first structural gene, and you need to remember this. Lac Z or lac Z produces an enzyme called beta galactosidase. So the spelling is really important. Beta galactosidase. Now, how do we know this is an enzyme? Just by looking at the name. How can we figure out it's an enzyme? The ASC at the end. Bilkul, the ASE at the end. This is a hint. This the एग्जाम क्वेश्चन और द नेम इटसेल्फ इज गिविंग यू अ हिंट कि ये एक एंजाइम की बात हो रही है। और ये एंजाइम कौन से रिएक्शंस को कैटलाइज करता है? दिस एंजाइम राइट हियर केमिकली breaks down, or you could say it's involved in the catalysis of lactose into galactose plus glucose. Now you would have looked at this in chapter 6 DNA की synthesis AS biology में कि galactose and glucose, they are simply examples of hexose sugars. What are hexose sugars? Hexose sugars are simply those sugars जिनमें 6 carbon atoms होते हैं, hence the word hex. Hex comes from the word hexagon, right? Hexagon has 6 sides. उसी तरीके से hexose मतलब 6 carbon atoms. So glucose C6H12O6, galactose C6H12O6 is just isomers of one another. What's lactose? Have you heard of the word lactose free milk? Yeah, lactose intolerance. Yeah, I have. Yeah, so many people are lactose intolerant. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडीज लैक्टोज मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। Hence the word lactose intolerant. Their body cannot tolerate the lactose molecule. ये मॉलिक्यूल किस में होता है? ये मॉलिक्यूल ज्यादातर मिल्क में फाउंड होता है। सो ऑब्वियसली जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो नॉर्मल मिल्क पी नहीं सकते क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है एंड दे कांट डाइजेस्ट द मिल्क प्रॉपर्ली। उसमें फिर बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं, कॉन्स्टिपेशंस हो जाती हैं एंड बेसिकली मेनी मेनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए दे ड्रिंक लैक्टोज फ्री मिल्क। उस मिल्क में लैक्टोज मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग एबल टू डाइजेस्ट इट। लैक्टोज एंजाइम सॉरी लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो नॉर्मली ब्रेक डाउन होता है बाय व्हाट एंजाइम? यू वुड हैव डन दिस इन एएस। व्हाट्स द एंजाइम नॉर्मली व्हिच ब्रेक्स डाउन लैक्टोज? Was it lactase? Do you remember this? Yeah, I was actually saying it, but again, I don't know. There's an issue. My mic was unmuting. Yeah, lactase. Yeah, I've studied it. Yeah. Yeah, so lactase enzyme normally is the enzyme which we talk about जो कि lactose को break down करता है। यहाँ पे the enzyme which breaks it down is beta galactosidase। ये beta क्या चीज है? This is simply a part of the name and this basically explains कि galactosidase एक ऐसा enzyme है जिसके बहुत सारे isomers हैं। जैसे for example एक प्रोटीन था which we looked at in hemoglobin, globin। तो ग्लोबिन में अल्फा ग्लोबिन भी था, बीटा ग्लोबिन भी था। इट्स द सेम थिंग, स्ट्रक्चरल एंजाइम आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। उसी तरीके से अल्फा गैलेक्टोसाइडेज भी होता है, बट यू डोंट नीड टू नो दैट, यू जस्ट नीड टू नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। एंड ये कौन सा स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस करती है? लैक जेड। नंबर टू, लैक वाई। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन। ये प्रोड्यूस करती है समथिंग कॉल्ड लैक्टोज
Permease. Any idea what this is? Just look at the name. Lactose permease. It increases the permeability of lactose into the cell बिल्कुल सबसे पहले तो इज दिस अ मॉलिक्यूल या एन एंजाइम enzyme. एंजाइम तो एक ऐसा एंजाइम है जो कि permeability hence the word permease so 90% of the time you just look at the name of the enzyme you're going to figure out what the function is you don't even need to remember it so lactose permease so permeability it increases it's an enzyme which increases the permeability of the bacterial cell or the prokaryotic cell to lactose molecules so यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ increases the permeability of the bacterial cell or prokaryote, it's almost the same thing. We're going to learn more about the differences between bacteria and prokaryotes in, I think, the next chapter or the next after that, the different domains. हम उसमें देखेंगे. So, bacterial cell to lactose molecules. Okay, right then. The last structural gene, LAC-A. LAC-A produce करता है something called trans acetylase. Now, when I write the word trans acetylase, मैंने यहाँ पे अभी तक कोई function नहीं लिखा है. Can you figure out the function by looking at the name? You can't, right? It's a very weird name, trans Yeah, it acetylase. is. Yeah. And यहाँ पे इसलिए as I said earlier 90% of the time you can figure out the function by the name but 10% of the time you can't. This right here is not in your syllabus as in कि इसका function क्या होना चाहिए but what is in your syllabus is इसका नाम क्या है. All you need to remember is the name of trans acetylase. But if you're interested I can even tell you the function if you want. Yeah, could you? या सो ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन ये होता है कि ये शुगर्स जो होती हैं सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट जहाँ पे यू वुड सी हम लैक्टोज की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं लैक्टोज इज अ शुगर कभी कभार प्रोकैरियोटिक सेल के सराउंडिंग्स में कुछ टॉक्सिसिटी से भरे हुए शुगर्स आ जाते हैं ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन है इन टॉक्सिसिटी से भरे हुए या टॉक्सिक शुगर्स को डिटॉक्सिफाई करने की सो लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग दिस you learned about the smooth endoplasmic reticulum in AS, right? Yes. And uska one of the functions in the liver kya tha? Do you remember that? You're giving the AS paper again. I This haven't is got to अच्छा, revising it. okay. So again, you should really start now. अच्छा, तो उसका one of the functions in the liver था alcohol metabolism. कि अगर if a person drinks alcohol, तो वो metabolize liver में जाके होती है. Alcohol metabolism जो smooth endoplasmic reticulum करता है in the liver, उसका एक और नाम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लिवर मतलब लिवर में से अल्कोहल को खत्म करना क्योंकि वंस अल्कोहल इज इंजेस्टेड इट गोज इनटू द बॉडी इट गोज स्ट्रेट टू द लिवर अब लिवर टॉक्सिक हो चुका है उसमें अल्कोहल है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है मेटाबोलाइज करना है ब्रेक डाउन करना है अल्कोहल को फ्रॉम द लिवर एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज दैट सो गोइंग बैक टू आवर टॉपिक ट्रांस एसिटाइलेज सिर्फ इन टॉक्सिक शुगर्स को डिटॉक्सिफाई करता है उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है उसको खत्म कर देता है सो इट बिकम्स अ नॉर्मल शुगर मॉलिक्यूल डज दैट मेक सेंस Yeah, it does. बट अगेन इट्स नॉट रियली इन योर सिलेबस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम एंड द लैक वाई एंड लैक जी के नाम भी जो वो प्रोड्यूस करते हैं एंड देयर फंक्शंस टू सो द ओनली थिंग नॉट इन द सिलेबस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज ओके अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम दो सिचुएशंस देखते हैं पहली सिचुएशन में हम एक बैक्टीरियल सेल को देखेंगे जिसके सराउंडिंग में कोई लैक्टोज शुगर नहीं है और फिर हम ऐसे एक बैक्टीरियल सेल को देखेंगे जिसके सराउंडिंग में लैक्टोज शुगर है बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वन पार्ट जो हमने अभी तक नहीं समझा दिस इज द ऑपरेटर रीजन इफ यू हैव लर्नड दिस इन स्कूल कुड यू एक्सप्लेन ब्रीफली कि ऑपरेटर रीजन एक्चुअली में होता क्या है
Sorry, just give me 1 second. Right. Apologies. Acha, I'm gonna just share screen again. Can you hear me? Yes, I can. Right. So we were talking about the operator region. Could you explain कि operator region actually में होता क्या है? Basically, it's the place where I think where the transcription factor it binds. No wait. It's basically the region uh where the allosterics. I think it has an allosteric site. अच्छा. Like basically, it's where the Mhm. like I think repressor protein binds like to control the transcription in prokaryotes. बिल्कुल, that's the answer I was looking for. Perfect. Operator region, you see this part right here? ये वो section है, ये वो binding site है जहाँ पे repressor protein आके attach करेगा. And if it all sounds really confusing, regulatory gene क्या है, repressor protein क्या है, operator क्यों आ गया एकदम से, promoter का फिर क्या काम है, we look all of this when we talk about the two situations which we are going to do right now. Situation number one. So first case, yeah, first situation, the bacterial cell is not surrounded by lactose sugars. Let's understand 2 points before again moving on with this. अगर bacterial cell lactose sugar से surrounded नहीं है, तो क्या इन genes को express करने का कोई फायदा है? No. No, we do not need lactose permease, for example, to increase the permeability of the bacterial cell to lactose. कोई lactose बाहर है ही नहीं, कोई lactose surrounding में है ही नहीं bacterial cell के. So there's no use of increasing the permeability of the cell to lactose. Again, number two, अगर lactose बाहर भी नहीं है, तो lactose अंदर भी नहीं आएगा, which means that you do not need something to chemically break down the lactose, which means you don't need this, you don't need this, and you don't need detoxification of the lactose sugars, which means कि हमें इन जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करना एज यू सेड अर्लियर. तो क्योंकि हमें इन जीन को एक्सप्रेस नहीं करना, वी नीड टू थिंक ऑफ अ वे कि हम इन जीन की एक्सप्रेशंस को बंद कर सकें. समथिंग वी टॉक्ड अबाउट लास्ट क्लास, स्विचिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन और टर्निंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. क्या रेगुलेटरी जीन का इसमें कोई फंक्शन होता है? इफ यस, तो फिर क्या फंक्शन होता है रेगुलेटरी जीन का? Uh, no, I don't think it has a function. एक्चुअली इट डज. रेगुलेटरी जीन का एक फंक्शन होता है. अब सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन क्या थी रेगुलेटरी जीन की. एक ऐसी जीन दो जो कि दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है. इजंट दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? Yeah, we we are. we need a gene which affects the expression of the lac operon कि हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेस ना हो. So the regulatory gene needs to do something or the other जिसकी वजह से ये lac operon में lac z, lac y, lac a एक्सप्रेस ही ना हो. रेगुलेटरी जीन करता क्या है? रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करता है अ रिप्रेसर प्रोटीन. व्हाट्स अ रिप्रेसर प्रोटीन? अ प्रोटीन जिसकी इनहिबिशन, सॉरी, अ प्रोटीन जिसकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है बिकॉज ऑफ एन अफेक्टर या अनदर मॉलिक्यूल, इजंट इट? Could you repeat? सो व्हाट्स अ रिप्रेसिबल एंजाइम की डेफिनेशन? Basically, the enzyme uh, whose activity can be controlled by an effector or like a repressor protein. बिल्कुल. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं समझने के, रिप्रेसर एंजाइम और रिप्रेसिबल एंजाइम. And repressor protein, are these two things the same thing? No. No, they're not the same thing. And बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि दोनों में रिप्रेसर का ही तो वर्ड है और प्रोटीन एंजाइम भी तो होते हैं. दे आर, proteins are enzymes, but repressible and repressor are two different things. Regulatory gene
हमेशा एक रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करेगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जो कि इनहिबिट करे एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। सो यू रिमेंबर हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि किसी जीन को स्विच ऑफ कैसे करना है, राइट है? Yeah. तो हमने क्या बोला था कि रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेस होगा तो वो एक ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जो कि या तो स्विच ऑफ करेगा जीन को या स्विच ऑन करेगा या उसका रेट को चेंज करेगा। ये प्रोटीन कौन सा था जो रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेस करके बना रहा था? दिस प्रोटीन इज रिप्रेसर प्रोटीन। सो you need to remember this one statement right here. Let me just bring this at the bottom here. One second. Trans-acetylase. Acha. Regulatory gene. And once you understand this statement, it's going to be really, really easy. Regulatory gene अब क्या करेगा? Regulatory gene codes for a repressor protein. और repressor protein का function क्या है? Inhibit करना the expression of other genes. So inhibits the expression of the other genes. Now I want you to go back to this and look at this the diagram ये किस तरीके से बनी हुई है. You have promoter region, operator region, and then these lac operon के अंदर lac Z, lac Y, lac A. You said operator क्या था? वो रीजन जहां पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे है और प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हुआ हुआ, विल इट बी एबल टू गो थ्रू द ऑपरेटर रीजन एंड देन ट्रांसक्रिप्ट दीज जीन्स? मतलब No. इन जी नो, बिल्कुल। एक बार रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे अटैच कर गया तो फिर प्रमोटर रीजन के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच था, इट कैन नॉट गो फॉरवर्ड, इट कैन नॉट फिजिकली गो फॉरवर्ड एंड देन ट्रांसक्राइब दीज जीन्स। वो हो ही नहीं सकता। सो ऑल वी नीड टू डू टू स्विच ऑफ देयर एक्सप्रेशन, गेट अ रिप्रेसर प्रोटीन, पुट इट राइट हियर। once we put it into the operator region, ये genes अब express ही नहीं होंगे, and that's what we wanted, right? So that's what we are trying to do. So first case, bacterial cell is not surrounded by lactose sugar. If it is not surrounded, तो फिर cell में क्या होगा? सबसे पहले, number one, and you need to remember all of these points. And you don't need to remember, it's a logical explanation which will make sense in a moment. सबसे पहले, RNA polymerase binds to the promoter region. And I'm going to explain this sentence in a minute. RNA polymerase binds to the promoter region. It moves along the promoter region and expresses the regulatory protein. हमारा इस वक्त मेन मिशन क्या है? What's our main goal? To produce a repressor protein. Which gene codes for a repressor protein? Is it a regulatory gene or is it a structural gene? Regulatory genes. बिल्कुल राइट है, रेगुलेटरी जीन कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन। तो अगर हमें एक रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए जो कि इस ऑपरेटर रीजन में जाके अटैच करे और इस एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को खत्म करे, वी नीड अ रिप्रेसर प्रोटीन। एंड हाउ इज दैट गोना टेक प्लेस? इफ द रेगुलेटरी जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड। फिर सवाल आता है, रेगुलेटरी जीन को कैसे एक्सप्रेस करें? तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इस प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। जब इस प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, फिर उसके बाद इट विल मूव थ्रू द प्रमोटर रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इट विल मूव थ्रू द प्रमोटर रीजन। वंस इट मूव्स थ्रू, देन इट विल ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड इन द एंड ट्रांसलेशन ऑफ द रेगुलेटरी जीन। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन। सो दैट्स व्हाट वी कैन राइट डाउन राइट हियर। नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन is the production of a repressor protein. This is what we wanted.
कि अब ये repressor protein produce हो चुका है. Now, what do you think this repressor protein is going to do? It's basically gonna prevent the transcription of the other genes. Yeah, that's right. And how is it going to do that? ये किसके साथ attach करेगा? Will it attach to LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, or will it attach to promoter, या will it attach to operator? The operator. बिल्कुल, the promoter, sorry, the protein will attach to the operator. Operator का काम ही यही है. वो it's made for that specific function कि एक प्रोटीन आएगा और उसके साथ अटैच कर जाएगा. एंड उसकी वजह से प्रोमोटर रीजन में जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट थी वो ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि ऑपरेटर का शेप चेंज हो जाएगा. दैट्स बेसिकली व्हाई वी पुट दैट ऑपरेटर राइट देयर. सो द प्रोटीन will attach to the operator region in the lac operon. अगेन एक ओपेरॉन क्या था? मिक्सचर ऑफ जीन्स कंट्रोल्ड बाय द सेम प्रोमोटर. अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा? नाउ इमेजिन दिस, इफ यू क्लोज योर आइज फॉर अ सेकंड एंड इमेजिन दिस, यू हैव द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन जो हमने डायग्राम में बनाई थी. उसकी वजह से अब क्या होगा? दिस रिजल्ट्स नंबर 3, दिस रिजल्ट्स in the binding site of the promoter region. ये बाइंडिंग साइट कौन सी बाइंडिंग साइट की हम बात कर रहे हैं? Which RNA polymerase binds to. So I'm going to write this in the bracket. Which RNA polymerase binds to. जहां ये बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन के साथ, ये बाइंडिंग साइट अब ब्लॉक हो जाएगी. I'm gonna highlight this. एक बार ये बाइंडिंग साइट ब्लॉक हो गई ना, उसके बाद यू नो द नेक्स्ट स्टेप्स जो होने वाले हैं और द कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले हैं. द आरएनए पॉलीमरेज कैन नो लॉन्गर RNA polymerase can no longer bind to the promoter region. और एक बार ये अगर प्रोमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी. ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दिस कि ये कंसेप्ट दिमाग में ना हो कि अगर प्रोमोटर रीजन से अटैच नहीं करेगा, कैन इट जस्ट डायरेक्टली अटैच टू द जीन एंड एक्सप्रेस इट? नो. अगर जीन को एक्सप्रेस होना है तो प्रोमोटर्स बाइंडिंग साइट पे अटैच होना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज को. इफ इट्स नॉट अटैचिंग, इफ फॉर सम रीजन इट्स नॉट, जो कि यहाँ पे था कि बाइंडिंग साइट ब्लॉक है, तो वो अटैच नहीं हो सकता, तो अब जीन की एक्सप्रेशन भी नहीं होगी. So meaning lac Z, lac Y, and lac A genes would no longer be expressed. और एक बार वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, सो टेल मी दिस, अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहे जीन्स इन दिस केस जहां पे लैक्टोज शुगर से सराउंडेड नहीं था बैक्टीरियल सेल, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? A good thing. It's a good thing. And if you're saying it's a good thing, how is it good for the bacterial cell? Shouldn't it be bad कि एक enzyme produce नहीं हो रहा है? Uh, no, like because lactose is like not present. So like Mhm. wait. Yeah, you're right. You're on the right track. Yeah. So like if lactose is not present, the lactose like which is in the like cell, I think, it's not being further broken down. Not really. अगर lactose, you just need to understand कि if lactose is not surrounding the cell, do we actually need these genes to be expressed? No, we don't. We don't. तो अगर ऐसी सिनेरियो ना बनती, ऐसी कोई ब्लॉकिंग नहीं होती एंड एवरीथिंग वुड गो एज इट इज, तो ये जीन्स तो एक्सप्रेस हो जाते. That would be bad for the bacterial cell in the sense कि ATP और amino acids की wastage होती. All of these genes being expressed मतलब polypeptide chains and proteins being produced जिसके लिए amino acids लगते हैं, energy बहुत ज़्यादा लगती है.
when we are blocking the expression of these genes because we don't need the product of their expressions, हमें उन enzymes की जरूरत ही नहीं है, तो aren't we conserving ATP and amino acids? Yeah, we are. Yeah, this is why this is a good thing for the cell. So you don't need to talk about कि lactose in the cell breakdown नहीं होगा, उससे उसका कोई relation नहीं है. It's just that हमने situation जो बनाई हुई थी कि बाहर कोई lactose नहीं है, तो we don't need a enzyme जो कि इसकी permeability बढ़ाए. When there is nothing outside, increasing the permeability is not going to make the lactose appear. Same case galactosidase के लिए, if there is no lactose, what are you going to chemically break down? So इसीलिए we are hence conserving ATP plus amino acids. Right. So that is it for ये वाला topic, ये वाली situation. So any confusion, anything? No, it's clear. Okay. अब case 2 पे आते हैं. First I'm going to explain the entire cell and then I'm just going to write it down ताकि बीच में हमारी explanation बार-बार रुक ना जाए. इस केस में बैक्टीरियल सेल अब लैक्टोज शुगर से सराउंडेड है. If it is surrounded, we now need these LAC-Z, LAC-Y and LAC-A genes to be expressed. क्योंकि इन एक्सप्रेशन के रिजल्ट में जो हमें एंजाइम्स मिलते हैं, हमें तो उनकी जरूरत है, राइट? वी नीड लैक्टोज परमिएज ताकि लैक्टोज सेल की परमिए लैक्टोज एंजाइम सॉरी लैक्टोज मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी बढ़े ऑफ द बैक्टीरियल सेल. वी नीड गैलेक्टोसाइडेज ताकि ये केमिकली ब्रेक डाउन कर सके लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. सो वी बेसिकली नीड ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स. How are we going to do that? Number one, RNA polymerase promoter region के साथ bind करेगा. So this promoter region right here, this जो कि regulatory gene को control करता है, RNA polymerase इस promoter region के साथ bind करेगा. It's going to move through the promoter region और regulatory gene express होगा. What's the result of a regulatory gene being expressed? What do you produce? Uh, if it's being expressed, Yeah, repressor proteins. repressor protein. बिल्कुल सही. Repressor protein अब produce हो चुका है. If we do not do anything, what's going to happen? The repressor protein is going to attach to the operator and the promoter region is going to promoter site for RNA polymerase अब block हो जाएगी. ये तीनों genes in the lac operon express नहीं होंगे. It's going to be the same thing all over again as in case 1. तो हमें क्या करना है? हमें इस रिप्रेसर प्रोटीन को प्रिवेंट करना है कि ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाए. Isn't that what we have to do? Yeah. Okay, let's look at how we are going to do that. Now, this is an assumption जो हम लेते हैं. और assumption क्या है? हमारी केस में हमने सिनेरियो क्या रखा था? बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय लैक्टो शुगर्स, मतलब सेल की बाउंड्रीज के बाहर लैक्टो शुगर्स हैं. अजम्पशन हम क्या लेंगे यहाँ पे कि अगर बहुत सारे लैक्टो शुगर्स बाहर हैं तो थोड़े से लैक्टो शुगर्स सेल के अंदर भी मौजूद होंगे. दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल. दैट्स एन assumption you need to understand कि some lactose sugars will be inside the cell because imagine it like this. लैक्टोज परमिएज का काम क्या था? परमिएबिलिटी बढ़ाना ऑफ द बैक्टीरियल सेल टू लैक्टोज. डज दैट मीन कि विदाउट अ लैक्टोज परमिएज कोई लैक्टोज मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में नहीं आ पाएगा? डज इट मीन दैट? Could you repeat the statement? सो अगर लैक्टोज परमिएज बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है टू लैक्टोज, डज दैट मीन कि अगर लैक्टोज परमिएज अपना काम नहीं करेगा तो कोई भी लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं आ पाएगा सेल के अंदर? डज इट मीन दैट? No, some molecules will still come. बिल्कुल. कुछ मॉलिक्यूल्स पहले भी आ रहे थे और कुछ मॉलिक्यूल्स बाद में भी आएंगे इवन व्हेन द लैक्टोज परमिएज अपना फंक्शन कैरी आउट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर परमिएज अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो प्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, डज नॉट मीन कि कोई भी लैक्टोज अंदर नहीं आएगा. अगर बहुत सारे बाहर हैं तो कुछ अभी भी अंदर आएंगे. दीज लैक्टोज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वाले लैक्टोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये करेंगे क्या? ये रिप्रेसर प्रोटीन के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे.
व्हाट इज द एलोस्टेरिक साइट? दिस इज चैप्टर 3 एएस। एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है जहां पे कोई भी सब्सटेंस जाके अटैच होता है। दिस इज नॉट द एक्टिव साइट, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एंजाइम को देखें, लेट्स सपोज दिस पार्ट राइट हियर इज द एक्टिव साइट। एलोस्टेरिक साइट होगी कोई यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, बेसिकली एनी अदर पार्ट ऑफ द एंजाइम which is not the active site. Does that make sense? Yeah, it does. Yeah. So अब जो लैक्टोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर थे वो क्या करेंगे? इस रिप्रेसर प्रोटीन के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन टू द रिप्रेसर प्रोटीन? It won't be able to work. इट वॉन्ट बी एबल टू, अच्छा, सो जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं, दिस इज अ प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन। अगर हम एंजाइम्स की बात करें और कोई सब्सटेंस आता है और एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर जाता है, व्हाट हैपेंस टू द एंजाइम? दिस इज The shape changes, so the substrate molecules won't be able to attach to the active site. बिल्कुल सही, द शेप चेंजेस, सबस्ट्रेट अब अटैच नहीं कर पाता। दिस इज नॉन कम्पेटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। हम इनहिबिट कर रहे हैं कि सब्सटेंस आके एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शेप चेंज हो रही है। दैट्स द की वर्ड, द की फ्रेज, शेप चेंज हो रही है। लेट्स गो बैक टू रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन में एलोस्टेरिक साइट जो रिप्रेसर प्रोटीन का है, उसके साथ कौन अटैच करेगा? लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन विल चेंज शेप। If it changes shape, is it complementary anymore to this binding site of the operator region? No, it's not. It's not. तो वो इस ऑपरेटर रीजन की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच नहीं कर पाएगा। अगर वो अटैच नहीं कर पाएगा, इज द प्रोमोटर रीजन स्टिल गोइंग टू बी ब्लॉक्ड? ये वाली? No. No, the promoter region अब खुली होगी, it's going to be open, which is why the RNA polymerase अब easily bind कर जाएगा promoter region के साथ। ये move along करेगा through the promoter, through the operator, and then into the genes। lag Z, lag Y और lag A के तीनों genes express होंगे। lag Z के प्रोडक्ट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, lag Y के प्रोडक्ट में लैक्टोज परमीज, एंड lag A के प्रोडक्ट में ट्रांस एसिटाइलेज प्रोड्यूस होगा। एंड इन द एंड, बिकॉज परमिएबिलिटी भी हमने बढ़ा दी सेल की टू लैक्टोज, बहुत सारा लैक्टोज अंदर आएगा। हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना दिया, बहुत सारा लैक्टोज ब्रेक डाउन भी होगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एनी कंफ्यूजन इस पूरे प्रोसेस No, it's clear. में? राइट, सो दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब आई नो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सच एज काई स्क्वायर टेस्ट, यू वुड हैव डन दिस अलोंग विद चैप्टर 16, या? Yeah, I did. या तो ये जो है ये नॉर्मली ऐसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं विच मैं जो हमेशा पढ़ाता हूँ A2 इज बेसिकली कि मैं सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट को एक साथ करता हूँ। सो यू हैव द पी टेस्ट, यू हैव द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, यू हैव द एक और भी दो टेस्ट है चैप्टर 18 में, यू हैव द काई स्क्वायर टेस्ट राइट हियर। एंड देन वील डू ऑल ऑफ दीज टुगेदर एक ही क्लास में, ताकि उससे P5 की भी तैयारी हो जाएगी एंड सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट एक साथ आ जाएंगे। सो वुड दैट बी फाइन? Yeah, it will. Right. So, is there anything else which you would have done in school जो यहाँ पे नहीं किया था apart from chi-square test? I just want to confirm. Uh, we done gene control in eukaryotes yet? Gene control. See, yes, this is what I was looking for. I thought I was missing a topic, and yeah, it's good that you realize this topic, right? It's about the Della proteins and the gibberellins, right? Yeah, the transcription factors Yes. and all. बिल्कुल सही, हाँ। तो मैं बस यही देख रहा था कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था, बट आई वाज जस्ट वाज़न्ट एबल टू मेक श्योर ऑफ कि ये कौन-सा टॉपिक है। सो इसलिए आई जस्ट थॉट टू आस्क। इट्स अ गुड दैट यू रिमेंबर्ड इट। ओके, सो वी हैव वन मोर टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल इन यूकैरियोट्स, जो हम अगली क्लास में करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट वी आर गोना डू दैट, एंड देन द अदर पार्ट वी आर गोना, द मेजॉरिटी पार्ट हम टॉपिकल्स कर लेंगे। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ द चैप्टर। Yeah, सो okay. एनी कन्फ्यूजन्स फॉर टुडे? एनीथिंग? No, it's clear. सो कुड यू गिव अस समरी ऑफ व्हाट वी डिड टुडे? Yeah, so basically we talked about the gene control in prokaryotes, about the role of repressible enzymes and repressive proteins. And repressive proteins basically they prevent the active.
they basically bind to the operator region and they prevent the transcription of some genes. And basically the repressible enzyme, it can it uh, the activity of this enzyme can be inhibited by the binding of a repressor protein. And basically, we Mhm. talked about the lac operon, and basically, it consists of three genes, three structural genes like lac Z, lac Y, and lac A. The lac Z produces galactosidase, and lac Y produces lactose permease, and lac A produces transacetylase. Galactosidase, basically it breaks down lactose into glucose and galactose, while Mhm. the lactose permease, it increases the uptake of glucose in the cells. And basically we discussed about the two cases if lactose is present or absent in the environment. If lactose is present, basically the repressor the repressible the repressible enzymes Mhm. wait The repressible enzyme, yeah. so I mean, I think you're talking about the repressive protein operator yeah gene के साथ. yeah the repressor proteins, cannot bind to the operator because I think lactose binds to the allosteric site, I think. बिल्कुल. So it's the Yeah. lactose molecule जो हमने assumption की थी. Yeah. Yeah, so basically the lactose molecules, they bind to the allosteric site, which changes the active site of the enzyme, and basically it cannot bind to the operator region. So basically it allows RNA polymerase to continue the transcription of the genes. And if lactose is absent in the environment, then basically the polymerase, it binds to the promoter region, but the repressor protein attaches to the operator region in the lac operon, and basically it causes the blocking of the binding side of the promoter region, I think. And Correct. hence the RNA polymerase cannot bind to the promoter, and the transcription of the genes cannot occur, and hence we basically conserve ATP and amino acids. बिल्कुल. Perfect. Right. So I believe that is all. बिल्कुल सही. Right. So we're just gonna be. मैं यहाँ पे notes update कर दूंगा after the class. I have it all written down. Just don't wanna write it down again. I'll just copy paste it. In the next class, as I said, हम आखिरी वाला topic करेंगे eukaryotes वाला, and I'll go through the syllabus once again just to make sure कि chapter 16 का कुछ नहीं रह गया. And then in the same class tomorrow, हम pass with the questions भी करेंगे. So make sure you just revise the entire topic again. Yeah, okay. Also, sir, for Ramzan, Yep. what are going to be the timings, like approx, if you have some in mind? Right. So I'm still just making the schedules. मैं बस 2 से 3 दिन में I'll just give you options to choose from. So whatever you would be more suitable with, we could just go with that. Yeah, okay, because like we're for our academy also, just sir is like fixing the timing, so I just wanted to make sure Yeah. they don't overlap. Right. So I'll just like maybe 1 to 2 days. Yeah, maximum 2 days. Now I'll just make sure to just send you the options for the schedule. Yeah, okay, thank you. Right. All right. Thank Okay, you. Love thank you, this. Allah Hafiz.